Now ionization. This is ionization energy. Minimum energy required to remove an electron. Okay. Energy required to remove an electron. Minimum energy required to remove an electron from outermost shell at its isolated gaseous state. Ionization enthalpy at its isolated gaseous state. What do you mean by isolated gaseous state? Do you know anything about isolated gaseous state? Why isolated gaseous state is required? Because at this state atom may consider as an individual. Okay. If you consider iron, and for this iron, if you take some small quantity of iron, there will be lot of iron atom, correct, into the piece of iron. So if any one atom means it has a electron proton, this is the proton, and outside here will be electron, here will be electron, so on, and beside atom it has also what? This is another beside atom proton, and outside there will be electron, there will be some electron. If you consider this one like this system, if you consider, then this electron is attracted by this nucleus, by one nucleus, and surrounded nucleus also to some extent. So if you want to remember, if you want to remove any electron like this condition, then you have to overcome all the forces, surrounding nucleus force and own nucleus force, then only this electron will be. So you can get exact attraction for his own nucleus, you can get. Okay, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम वो खुद का इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स में अट्रैक्ट कर रहा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉपर्टीज, हर एक इंडिविजुअल एटम कैसे करके उसका अट्रैक्शन चेंज होगा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ये हम लोगों को पहले जानकारी होना चाहिए. ओके, हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किसके बारे में, एटम के बारे में. तो हर एक इंडिविजुअल एटम कितना फोर्स में उसका आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो कैसे करके पता चलेगा. फिर तुम क्या करोगे, इसको इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करोगे. इधर से तुम एक इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करोगे. एट दिस state is called isolated gaseous state, where individual atoms are present. Okay, there is no surrounding nucleus force or no interfere of the another force, only electron and self proton, that attractions are present. Okay, so it is required in your definition to mention isolated gaseous state. Okay, at this state energy will be different compared to when atom are present with surrounded other atom, then force will be different. Okay, जब एक साथ रहेगा तब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना फोर्स लगेगा और जब इंडिविजुअली रहेगा तब फोर्स दोनों अलग होता है. तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में,
जब वो आइसोलेटेड कंडीशन में रहता है उस टाइम कितना फोर्स लगता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, तो यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत सारे टाइप्स हो सकता है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो सकता है, फास्ट आयनाइजेशन हो सकता है, सेकेंड आयनाइजेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन। ओके, फास्ट आयनाइजेशन। फास्ट आयनाइजेशन मीन्स कोई एक एटम उधर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसको बोलता है फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE1। अगर A+ हो गया, फिर तुम दूसरा और एक इलेक्ट्रॉन निकालने चाहोगे, तब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली A2+ से अगर 3+, A2+ से अगर 3+, ये इसको क्या बोलता है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। A3+ to 2+ to IE3। But if you see the order of energy, then always IE1 it should be less than IE2, it should be less than IE3. This is called third ionization. Third ionization energy, correct? So IE1, IE2, IE3, this is the successive ionization. So may I say this one is third ionization, A2, A3+ plus 3 electron. Is this third ionization? No. In between first, second, third, all are present. Only third ionization when this change will occur, 2+ to 3+. You can say the transformation of A to 3+ is a third ionization. You can't say. In between this, you have to, go through this process. Okay. First, one electron. This energy, amount of energy is called first ionization. Then for this transformation, second, and for this transformation it will be third. Okay. At a time, if 3 electron remove and this process, overall this is called third ionization. This is not accepted. Okay. So this is not third ionization expression. Third ionization expression is this. Okay. So if in your question, suppose for this transformation 4500 kilocalorie energy required per mole, this mass energy if it is required, and in case of this first IE has given, second IE has given, then third IE you can calculate, because first, second, third is equals to this. If first IE is suppose 1800, 1200, then kilocalorie, then it will be to some extent greater than this value. Why? Why second ionization is greater than first ionization? Because this size is smaller than A. If size is smaller, then nucleus to outermost electron distance is less. If nucleus to outermost electron distance is less, then more amount of energy is required to remove the outermost electron, because size is smaller. Okay? तो साइज जितना छोटा होगा, आउटर से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा.
क्यों ज़्यादा एनर्जी लगेगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव तब बढ़ गया ना, आउटर इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव तब बढ़ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है, तो ज़्यादा खींच रहा है मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगा। 2 प्लस इसका साइज और भी छोटा है तो उसके लिए और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, करेक्ट। तो इसके लिए अगर एनर्जी 1400 किलो कैलोरी होगा तो इसका एनर्जी कितना होगा? सो थर्ड आई it will be 4500 minus 1200 minus 1400 1900 it is greater highest third ionization compared to first and second. Okay, so likewise you can solve ionization energy. If second if A22 plus energy has given, A22 plus energy has given and first ionization also given, then second ionization simply you have to subtract, correct. So likewise question will come. And another thing, what is the trend? Trend means into the periodic table, if you go along the period and down the groove, then what you will observe about the ionization energy? क्या देखा जाएगा? देखो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज. साइज डिक्रीज मीन्स more amount of energy required, so ionization energy increased. If ionization energy increased along the period, then down the group it will be opposite, decrease, correct. So I across the period and down the group, the change is like this. Okay, here the change will be likewise. So factors affecting IE. Factor affecting IE, first size smaller, IE greater, so indirectly proportional, correct. If size smaller, then ionization energy will be more, so it will be inversely proportional to size. Then ionization energy, stability or electronic configuration, how it will be changed? In case of half filled or full filled, ionization energy will be more. The atom having half or fulfill electron atom having half or fulfill electron configuration or electronic configuration क्या होगा? क्या होगा? हाँ, configuration more will be the IE compared to other which does not have half filled or full filled electronic configuration, correct. Another factor, other factor that is Z effective. Z effective more means IE more, correct. Another factor, sigma means shielding constant. Sigma means shielding constant. Shielding constant means
this is our nucleus, and inside, you know, there is a inner shell electron, and suppose this electron is attracted by the nucleus, but this attraction will be less due to the presence of inner shell electron, because this इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको गार्ड तैयार कर रहा है, गार्ड, गार्ड मीन्स स्क्रीनिंग और शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट तैयार कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट तैयार कर रहा है। अगर ये अंदर में ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा फोर्स में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो अट्रैक्टेड हो रहा है ना, तो इसका अट्रैक्शन पावर जो बाहर रहेगा उसका कम हो जाएगा, तो इसको बोलता है शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखता है, मतलब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम कर देता है, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलता है। तो ये जो एक कांस्टेंट, हर एक एटम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा गार्ड करेगा, ज़्यादा गार्ड करेगा मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है मतलब इजीली निकल जाएगा, थोड़ा एनर्जी देने से निकल जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कम एनर्जी लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, किसका कम होता है, मैंने बोला था d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका शील्डिंग पावर कम रहता है। अगर 4f का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4f14, तब क्या होता है, f का शील्ड करने का पावर बहुत कम है, तो f में 14 इलेक्ट्रॉन है, इक्विवेलेंट 14 प्रोटॉन भी है अंदर में, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इनर में क्या करता है, शील्ड करता है। तो जो लैंथेनॉइड ग्रुप है उसमें इनर शेल में 4f इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका शील्ड करने का पावर कम है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर जितना बढ़ेगा लैंथेनॉइड का, उसका साइज उतना घटेगा। क्यों, 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर कम है, मतलब Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा Z इफेक्टिव उतना बढ़ेगा, शील्डिंग पावर जितना ज़्यादा होगा Z इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो इसके लिए क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला if sigma value greater then this value will be lower, so as per this we can say that is sigma inversely proportional to जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, मोर पॉजिटिव कैटायन उतना ज़्यादा आई। मैंने देखा था ना, A प्लस, A2 प्लस, A3 प्लस, जितना I प्लस बढ़ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने में ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब साइज कम, और एनायन के लिए ऑपोजिट, मोर नेगेटिव एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। नंबर 7, S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा, उधर से इलेक्ट्रॉन निकलने थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो ठीक है। जैसे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पता है, तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पता है, लास्ट क्लास में हुआ था। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, एस का, क्यों, एस न्यूक्लियस का पास रहता है, उसको बाद पी थोड़ा दूर में रहता है, उसको बाद डी, उसके बाद एफ, इसलिए एफ का शील्डिंग पावर बहुत कम है, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कम है, वो न्यूक्लियस के पास में नहीं रहता है, थोड़ा दूर में रहता है, इसलिए उसका डिफ्यूज स्टेट ज़्यादा है, तो उसका शील्डिंग पावर भी कम है। ओके,
तो ये एज पर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो उसका वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, और ज़्यादा पास रहेगा तो ज़्यादा शील्ड करेगा, और ज़्यादा शील्ड करेगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकालने चाहूँगा, एस क्या है, न्यूक्लियस के पास है, उधर से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। उसके बाद पी से, उसके बाद डी से, तो किसका ज़्यादा एनर्जी? जिसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना, हाँ, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए बेरिलियम बोरोन में थोड़ा अलग होता है। ये हमको ऐसा करके सोचना पड़ेगा, एस में इलेक्ट्रॉन है तब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा कंपेयर टू पी। एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान होगा क्योंकि वो दूर में रहता है। तो जितना पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो इसके लिए होगा, लेकिन ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसके ऊपर काम करेगा? अगर एस में इलेक्ट्रॉन है और पी में है और डी में है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा? एस है, तो उसको पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बोलता है। अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आई ज़्यादा होगा। इसलिए पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है? एस ज़्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। एज पर दिस थ्योरी एफ से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत आसान है, मतलब बहुत आसानी से एफ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईई, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईई, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या होगा? पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, दैट इज नंबर 1 क्या है? एल आई। नंबर 2 एल आई के बाद क्या रहता है? बी। उसके बाद क्या रहता है? 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 उसके बाद नोबल गैस रहता है। नोबल गैस का भी ज़्यादा होगा क्योंकि मोस्ट स्टेबल। तो अब बताओ इसका फास्ट आई ऑर्डर, तो ये पीरियोडिक टेबल का कैसा रहा? ये अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज्ड साइज। डिक्रीज साइज मीन्स increase IE, correct? So highest for fluorine and lowest for lithium. Then order it will be increasing, but here and here it will be different because it has 2s2 2p3 half filled electron, last, you know, 1s2 2s2 2p3. So this is half filled electron, difficult to remove electron. Half filled is more stable, but here it will be 2p4 last electron. So remove electron is more easy compared to nitrogen due to half filled. Okay, for this case beryllium 1s2 2s2, here it will be 1s2 2s2 2p1. Here you see this is a full fill as well as s electron. S electron, removal of electron from S is difficult compared to P. Okay, so S electron removal
of electron from S is more difficult compared to P, because P has a less penetrating effect compared to S. Okay, that's why it will be to some extent exception. So the correct order will be a lithium and then boron, then beryllium and then carbon and then oxygen, then nitrogen, then fluorine. What will be the second IE order? IE2 or second IE. In case of second IE, after removal of first electron, if you consider, then after removal of first electron, in case of this N plus, outer electron will be N plus 2, second IE means N plus 2 N2 plus, correct? This transformation is called second IE. Second IE, N plus 2 N2 plus. In that state, electronic configuration 2p2. In case of oxygen, O plus 2 O 2 plus plus electron. In that condition, electron will be here, okay, 2p3 means half filled. So it is more difficult to remove electron at IE2. Are you getting? In case of second IE, half filled is oxygen, so more energy required. So oxygen IE will be greater compared to nitrogen. There is no exception in second IE. Here it will be the same thing. After removal of first electron, it will be full fill 1s2 2s2, and so from that state removal of electron is more difficult. But here after removal of one electron, it will be 2s1, so it can remove easily, it can give electron easily, because if another electron remove, it will be just like helium, stable configuration. So on that time easy to remove electron. So second IE, there is no exception. Along the period it will be as per this. So second IE order, lithium, then beryllium, then boron, then carbon, then nitrogen, then oxygen, then fluorine. Same, enthalpy and energy both are synonymous. Okay. If you compare ionization energy, another problem, order of IE. Okay, order of IE. Order of IE, if you consider the order of IE, then in case of 13 group, first is boron, after this aluminium, after this gallium, after this indium, after this thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. What will be the order of IE? Down the group size increases. So highest will be boron, because the smallest in size. After that, here boron as highest. After that, no, here some exception, gallium. Already we have discussed in previous class, that is there is a exception, scandite contraction in gallium, it is observed.
due to inner shell 3d10 electron. Inner shell, if 3d10 electrons are present, then d shielding power is very less. So, sigma value will be less. So, Z effective will be more. So, it will be difficult to remove electron, and size is less than aluminum. There is some exception. So, the order will be like this: aluminum, then indium, then thallium, correct? This is the order. Another problem, likewise this problem may come in your exam. Suppose for a metal chloride, for a metal M plus to M2 plus, it has given, this is 200 and this is 600, M2 plus to M3 plus, IE3, it has given 750 kilocalorie, M3 plus to M4 plus, IE4, it has given 1500. From this observation, calculate the formula of metallic chloride. Calculate the formula for the metallic chloride. What will be the formula for the metallic chloride? First, we have to identify the most stable state of the atom. What is the most stable state of the atom? Suppose any atom in like Al3 plus, we know the valency aluminum has Al3 plus, Al3 plus that we know. So, Al3 plus is the most stable oxidation state of aluminum. That means if you see Al2 plus, so Al2 plus to Al3 plus, it can change easily, but Al3 plus to Al4 plus, it is difficult to change, because so here it will be easy to change, here it will be difficult to change, correct? Here it will be difficult to change. So, from this concept, relate with the value, which one is difficult to change and which one is the easy to change. You see here some point you can identify easily, that is M plus this is what M to M plus 200 energy is required. After that 600 means difference is more, okay. Then for this change only 150 extra amount of energy required. Here how much extra amount? 400. Here 150. Then 750. Means it is difficult to change. This is easy to change, because compared to that, for this change only 150 energy required. That is also less than from neutral to 1 plus formation. Neutral to 1 plus means neutral to plus M plus 200 energy difference. Neutral to M plus 200, but here for this change only 150. That means which one is easy to change? This step. So this change will be spontaneous, easy to change.
So most stable form is this, because this M want to be M3 plus, because it has a stable valence state 3 plus. So M3 plus is the most stable oxidation state. If you know this, then you can calculate easily metallic chloride formula. That is metallic chloride formula, that will be M3 plus and chlorine minus 1, interchange cross method, then formula will be MCl3, correct? Here generalized. আমি যদি একটা মেটাল, যে কোনো একটা মেটাল বলে দিই, ওর তো ভ্যালেন্সি ফিক্স। আমি যদি বলে দিই অ্যালুমিনিয়ামের ক্লোরাইডের ফর্মুলা, তো আমরা আগে থেকেই জানি AlCl3, তাহলে আর ক্যালকুলেট করার কি হলো। এবার যদি আননোন মেটাল, আমি জানি না, ওর শুধু আয়নাইজেশনের ডেটাগুলো জানি। if I say that what is the formula for aluminium chloride, then no need to calculate, we know that AlCl3, okay. But if it is unknown, unknown means M is generalized, any metal, only we know data of ionization energy, and from the data you have to calculate the metallic chloride, generalize M. So you don't know the stable oxidation state for the M metal, you have to identify with the help of change of IE, correct? ये समझ में आया? yes. इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, करना पड़ेगा। After that IE over, now electronegativity, right? Electronegativity. What is it? Electronegativity, it is the power of attraction, right? It is the power of attraction of shear paired electron or covalent bonded electron towards nucleus. What? The nucleus. Towards the nucleus is called. What is the trends of electronegativity? Trends means left to right, down the groove. How it will vary? Left to right, size decrease. If size decrease means, suppose 2 atom, 1 atom is that much size and it is, you know, proton, and which is bonded with another proton, and the bond is in between the overlapping zone, okay. Suppose, you know, these types of bond, covalent bond, okay. So if you compare the electronegativity, electronegativity means bonded electron, and bonded electrons like in between this bond, इस बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींचेगा? ये और ये। कौन ज़्यादा खींचेगा? छोटा वाला। क्यों? उस न्यूक्लियस के पास में है, लेकिन ये वाला न्यूक्लियस से दूर में है। तो न्यूक्लियस के अगर ज़्यादा दूर में है, अगर देखा जाएगा, ये क्या है? न्यूक्लियस का बहुत दूर है, तो ये ज़्यादा खींच पाएगा, लेकिन ये वाला न्यूक्लियस के पास में है। तो ये जो एट्रैक्शन पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने का पावर, उसका न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट करने का पावर। तो किसका ज़्यादा होगा? जिसका एटॉमिक साइज छोटा है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, increases. So electronegativity, here it will be, and here it will be decrease.
Why decrease? Size reduce. Yes, down the group size increases. Okay, so this is the basic of electronegativity. Now, highest electronegative. What is the highest electronegative atom? What is the name? Smallest size element, that is fluorine. Highest electronegative. Okay, so throughout the periodic table, order phone call F O N C L, ये हाईएस्ट है. ओके, जितना सारे एलिमेंट है उसका अंदर ये ऑर्डर हाईएस्ट है. तो इसको मेजर करने का बहुत सारे स्केल होता है. क्या क्या स्केल होता है? पाउलिंग स्केल, मूलिकन स्केल और एलरेड-रॉचाउ स्केल, AR scale. Okay, so with the help of these three scale we can calculate electronegativity. To write the name of the scale by which electronegativity may calculate, write the name of the scale. Number 1 Mulliken scale, number 2 Mulliken, Mulliken. Mulliken scale. Pauling, Pauling, Pauling scale. Number 3 AR scale, AR, A full stop, R full stop, AR scale. Okay, Mulliken, Mullikan, Mulliken. With the help of these three scale we can calculate electronegativity, and highest is fluorine. Correct? Factor affecting electronegativity. What are the factors may affect the electronegativity? Write the factor affecting electronegativity. Factors, right? Factors affecting electronegativity. Number 1 साइज. साइज के साथ कैसे वैरी करेगा बताओ? साइज जितना बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नंबर 2 और किसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करेगा? जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा. नंबर 3 ये तो उल्टा होता है, शील्डिंग, ये जेड इफेक्टिव के साथ उल्टा होता है ना. ये शील्डिंग कांस्टेंट जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा. नंबर 4 में क्या होगा? नंबर 4 I can say that is S character. S character. S character जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ेगा. इसलिए C is triple bond CH. Order of bond length. Order of bond length. This Ca is bond length. This Ca is bond length. This Ca is bond length are different. Why? This carbon is sp3. This carbon is sp2. Sp, and this carbon is sp2. That you know, फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम लोग क्या जितना सिग्मा बॉन्ड होता है स्टेरिक नंबर से, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है? sp3. कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है उसको क्या बोला जाता है? sp2. अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसको क्या बोला जाएगा? sp. ओके, तो
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलता है, ये बाद में पता चलेगा। तो ये देखो इसको अंदर एस कितना परसेंटेज है, 50% है ना, एक एस और एक पी है हाइब्रिडाइजेशन। इसको अंदर एस कितना परसेंटेज है, 33.3%, बिकॉज टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक एस 2 पी, तो टोटल 3 अगर 100% है तो एक एस कितना परसेंटेज, ये क्या है, एक एस 3 पी, टोटल 4 ऑर्बिटल है, तो ये इसका परसेंटेज 25। तो जितना ज़्यादा एस परसेंटेज बढ़ेगा उतना पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो एस क्या रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है, तो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, इसके कॉज में बॉन्ड लेंथ, अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता है, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है उसका आउटर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अगर छोटा साइज है बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो किसका छोटा साइज है, स्मॉलेस्ट साइज, जब एस कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब इसका साइज छोटा है, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो एस कैरेक्टर के साथ कैसे करके वैरी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये भी एक फैक्टर्स। कैटायन पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोर नेगेटिव, तो दिस आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो गया, नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्लैश इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सेम, इट में रिप्रेजेंट डेल्टा एच ईजी और डेल्टा ईजी एच, इलेक्ट्रॉन गेन, ईजी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन, इट में represent like this, delta Eg, H means enthalpy. Now what will be the definition of electron gain enthalpy? It is the amount of energy change due to accept an electron of its outermost shell at its isolated gaseous state. Amount of energy exchange, some book follow likewise amount of energy release after accept an electron at its isolated gaseous state, outermost shell at its isolated gaseous state. But sometime always it's not true that always energy will release, sometime energy may gain also. So it is better to mention amount of energy change, it may release or gain, okay, but some book mention amount of energy release. In your NCERT what it has written, when an electron added to neutral gaseous atom to convert it into negative ion, the enthalpy change, means enthalpy change means energy change, there is not mentioned, clearly mentioned amount of energy release, okay. Most of the time amount energy is released means exothermic conversion, most of the element के लिए वही होता है, एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन कभी कभी गेन भी होता है। कब गेन होता है, मतलब एंडोथर्मिक कब होता है, अगर एंडोथर्मिक कब होता है, अगर नोबल गैसेस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कभी, तो अगर गेन करेगा उसका स्टेबिलिटी हैम्पर हो जाएगा, तो इसलिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेगा,
तो ये एंडोथर्मिक चेंज, ऑन दैट टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। लाइक मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, वो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो स्टेबल होता है, Na plus K plus, but Na minus K minus, it's not stable at all, stable Na minus K minus, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी दे के फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो विच इज़ डिफ़िकल्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक conversion. Okay, so it is not universally true all the case after accept of electron it will release energy. This is not universally true. Okay, so we will prefer likewise it is the amount of energy exchange. Electron affinity is the amount of energy change or enthalpy change. You can write this one enthalpy also. Okay, change after accept an electron into the outermost shell at its isolated gaseous state. Correct? So in that condition, size, if it is more, then acceptance will be less or more. Small size, suppose one atom, it is in a small size, nucleus is here, another bigger size, nucleus is here, acceptance of electron into the shell and into the cell, which is more easier. Small size more easier because distance between nucleus to electron is less, so electron will be attracted more compared to larger size because it has a bigger distance between outer electron and nucleus, so this electron will be attracted less. Correct? So left to right size decreases means electron affinity increase, and down the group increase means more energy will be released, means more exothermic, that is more exothermic changes. Exothermic means you know energy release after any changes. Exothermic, more exothermic changes. Okay, so highest electronegativity will be smallest size element name fluorine. Okay, smallest size element is fluorine, but highest electron affinity will be chlorine. Okay, you have to remember this one, it is an exception. Highest electron affinity, highest electron affinity किसका, क्लोरीन, दो फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दो फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, chlorine has highest electron affinity. Why? Write the question. Why Cl is the highest IE value, electron gain, delta
AgG than fluorine, though it is small in size. What will be the answer? Fluorine is exceptionally small in size. Fluorine is exceptionally small in size. So, after accept an electron, it feels repulsion. F is exceptionally small in size, so after accept an electron, it feels repulsion by the surrounding electrons, and therefore what will happen? Therefore acceptance will be less, tendency to accept, so the tendency to accept is less compared to chlorine, as chlorine is comparatively bigger in size. Chlorine is comparatively bigger in size. Comparatively bigger in size. Okay. So, in that condition repulsion will be less. So, repulsion will be less, electron repulsion. So, electron repulsion is less and acceptance is more. Acceptance is more, and that's why chlorine has higher delta Eg value. Okay, this will be the answer. Now arrange according to increasing order of delta Eg, right? Arrange according to increasing order of delta Eg. Number 1, group 17, write the order. Group 17, write the order. What will be the order? Group 17, chlorine is highest, after that fluorine, right? Then bromine, then iodine, then astatine. Number 2, group 16, OSACTEPO. The first oxygen is smallest size, but it will feel repulsion due to exceptionally small in size throughout this group. So, S, Ac, Te, PO, and then oxygen list. Okay. After that, group 15. Group 15, it has a stable electronic configuration, that is half filled electronic configuration. So, accept of electron, it will not favor the stability, because after accepting an electron it will not be stable state. So, acceptance will be less. So,
electron will repel by the element. Okay, which one will repel more? More smaller, more repulsion. So, order of affinity it will be just reverse. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. But here order will be nitrogen, that is less, then phosphorus, then arsenic, then antimony, then bismuth. Bismuth is highest. Oh, increasing order. This is the increasing order, correct? But these are the decreasing order. You have to write by reverse. Okay, this is the decreasing order. Decreasing order. And this is increasing order. Okay. So these are the electron affinity. Suppose for the element X, delta Eg is minus 500. Delta Eg for Y, delta Eg is minus 100. Now plus 100, and Z, delta Eg is equals to minus 200. Arrange according to increasing order of electron affinity. Electron affinity, more negative means more electron affinity. More exothermics means acceptance will be highest. Okay, acceptance highest means highest electron affinity. So electron affinity will be highest for X, then Z, then Y. Now I can give example of periodic trends by combinations. No, right. Electron trends for the following: metallic character or reducing character or basic character. These are the synonymous. If metallic character more means reducing character more basic character. Okay. So if you know the one properties, simultaneously all will come the same, all will show the same result. So left to right and down the group, if you consider, then how it may vary. Left to right and down the group, if you consider, then size left to right decrease or increase? Decrease. Size decrease means metallic character. What is metallic character? Tendency to remove electron. If it is more, then more metallic. So size smaller, small size, tendency to lose electron more or less? Less. If tendency to lose electron less means less metallic. So metallic character decreased, tendency to lose electron less, correct? Tendency to lose electron is lower or less. Tendency to lose electron is less as decreased in size. So metallic character decrease, reducing character decrease, basic character decrease along the period. Simultaneously down the group, if you consider the down the group, then down the group it will be
What types? Down the group? Increase. So down the group increased. Down the group increase means all, because size increase. Size increase means lose electron, tendency to lose electron more. So more metallic, more basic, more reducing character. Okay. Now in case of second point, non-metallic and electropositivity. Electropositivity, that will be similar, more. Now non-metallic character. After that oxidizing character. Electronegativity already we have discussed, so no need to mention here. Already we have discussed, no, electronegativity. So what will be the change? Vice versa types. It will be increased, it will be decreased. The cause is just opposite of this. If size less means lose electron, tendency to lose electron less or gain electron more. If tendency to gain electron more means non-metallic. So left to right size decrease, so gaining of electron is more, tendency to gain electron more, so more non-metallic character, more oxidizing character. Oxidizing character means itself reduction, and for other oxidizing, help to oxidation is called oxidizing agent or oxidizing character. So it can lose it can't lose electron. It easy to gain electron. Gain electron means itself reduction. Itself reduction means oxidizing character, oxidizing agent. Okay. So do you know this concept? Oxidizing agent means itself reduction and for help in oxidation, oxidizing agent. And losing of electron is called oxidation, gaining of electron is called reduction. So itself reduction means oxidizing agent. So size less means more tendency to gain electron is called reduction. So this one is oxidizing agent. Okay. So oxidizing character will increase that side and that side decrease. Acidic character also same, because you know acid means HCl, H2SO4. Basic means NaOH, KOH, where it is present, NaK, that side. Yes. But H2SO4, HCl, so Cl, S, all are present that side. Okay. This is why acidic character increase and decrease. Okay. So up to this, and another one question, common question may come in your school examination. Fast electron gain enthalpy, right? This question may come. Fast electron delta ECG, delta is exothermic for oxygen or sulfur, but second electron gain is endothermic. Okay. In your exam it may come for oxygen or for sulfur, anyone, by mentioning anyone among oxygen or sulfur. Okay. So
you have to write first delta EgH1. In that condition, what you have to write? Oxygen neutral after gaining electron O minus plus heat exothermic, that means. But second delta EgH2, here oxygen minus plus gaining of another electron, it will be O2 minus. But here heat is required in that side. It is required in that side, no? Endo means. So this conversion is different from this. Why? Oxygen, right? Oxygen is octet deficient molecule. Oxygen is octet deficient atom. Oxygen is Electron deficient atom or octet deficient atom. Octet deficient atom, and electronegativity is high. So acceptance of first electron acceptance of first electron may cause increase of the stability or increases stability. Acceptance of first electron increases the stability. So it is a exothermic change. If stability increases means it will release energy. If anything become more stable, then that means by losing of electron it will be more stable always. Okay. But in case of second electron gain, it makes repulsion to accept another electron into the O minus, O negative ion, O minus ion, and this is why acceptance is less. In that condition, energy is required to accept the second electron, and that is why second electron gain is endothermic. So this is due to repulsion, electron repulsion, and this is due to increased stability after accept electron. Why this is exo? Due to increased stability. Why this is endo? Repulsion. Okay, these are the main thing you have to mention. And another you will study yourself, that is what is diagonal relationship. Okay, write this question, diagonal relationship. It has a less chance to come in your exam. Diagonal relationship. What is this diagonal relationship? Do you know? Okay, then write. Between period 2 and 3, diagonally same physical and chemical character is observed, which is called diagonal relationship. Have you written? Tell me.
which is called, This is called diagonal relation. as for example, lithium similar with, you know, the periodic table. Do you know the periodic table? No. First element lithium, उसको बाद बेरिलियम, उसको बाद इधर रहता है थोड़ा गैप, इधर क्या रहता है बोरोन, उसको बाद कार्बन, उसको बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस। इसके नीचे क्या रहता है Na, इसके नीचे Mg, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। So this similar character, 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 these are the diagonal relationship. But throughout the periodic table you can't apply this concept, okay, Only period. only period 2 and 3.